टिके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु पिला माने आमे इंडियन इकोनॉमी रो प्रीवियस क्लास रे आमे तीनटा क्लास रो डिस्कशन करथिले सब्जेक्टिव ऊपर तो आज तार आमे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिके देखिबा बुझिला तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रही आपन को इजी हबो आंसर मु देइनी आपन एटे चूज करिवे म आपन को 1 2 सेकंड देबी नेक्स्ट में आंसर आपन को कहिबी ओके तो देरी न करी आज स्टार्ट करिवा इंडियन इकोनॉमिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जोटा कि आपणकर ओएसएससी सीजीएल पे आपणकर इंपोर्टेंट हो जिवो किंबा जदि आपण हाई कोर्ट एग्जाम पे देबा चाहछन बा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम देबा चाहछन ये आपन को हेल्पफुल हो पारिबो हैला कारण इकोनॉमी गोट सब्जेक्ट आपनर सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे तो चलन तो स्टार्ट करिबा देरी न करी देखो कौन अछि which one of the following countries wait which of one of the following country has the largest size of the literate population in the age group of 15 plus in the world देखो which one of the following country has the largest size of the illiterate हला सॉरी literate कोच illiterate population in the age group of 15 plus हला तो एटा आसीबो कोन कंट्री हिजबो श्रीलंका मन रखिबो डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स गोटे देशर डेवलपमेंट तार कौथु जना पड़े पर कैपिटल इनकम एवरेज लिटरेसी लेवल हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल नन ऑफ दिस तो यहाँ कौन हम ना गोटे देशर पर कैपिटल इनकम केते से अनुसार गोटे देशर डेवलपमेंट जना पड़े है ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग गोटे देशर पर कैपिटल इनकम आम केमिति बाहर करबा बा केमिति कैलकुलेशन करबा द टोटल इनकम ए पर्सन बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री तो कैपिटल इनकम आम केमिति कैलकुलेट करबा पर कैपिटल इनकम सॉरी तो बाय कौन हम बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन है नेशनल इनकम जतिक अच्छी बुझला नेशनल इनकम जतिक अच्छी टोटल पॉपुलेशन सहित कौन कर डिवाइड ताको टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड दे दो ओके केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहीं इट हैज गुड क्लाइमेटिक कंडीशन इट हैज एडिक्वेट infrastructure it has adequate provision of basic health and educational facility it has poor net attendance ratio तो एटा आसीबो कोन ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो which of the following neighbor country has better performance in terms of human development than India which of the following neighbor countries has better performance in terms of human development than India तो ये कौन कंट्री श्रीलंका assume there are 4 families in a country the average per capital income of this family is 5000 if the income of the 3 families 4000 7000 and 3000 respectively what is the income of the fourth family तो पहले एटा कैलकुलेटिव पचार आपन को आपन चाहिए करेंगे अदरवाइज एमती कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपनर आसेनी ओके यार आंसर हो कौन 6000 ओके नेक्स्ट देख हाँ according to the world development report 2004 low income countries are those which have per capital income of 2004 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अनुसार लो इनकम कंट्री क्या आम कहवा कह देख जार कौन पर कैपिटल इनकम के $825 और लेस है $825 कि ताठू कम होम आम कौन कह लो इनकम कंट्रीज आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए डेवलपमेंट गोल फॉर ए लैंडलेस रूरल लेबरर देख आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी
ए डेवलपमेंट गोल है कोटा भी गोटे कौन उन्नतमूलक कार्यक्रम नुहे फॉर ए लैंडलेस रूरल लेबरर कोड़ा हो पार मोर डेज ऑफ वर्क दबा यहाँ गोटे कौन गोल बेटर वेजेस बा दरमा दबा ये भी गोटे गोल क्वालिटी एजुकेशन पिला क्वालिटी एजुकेशन दबा ये गोटे कौन डेवलपमेंट गोल किंतु फॉरेन टूर ये गोटे कौन डेवलपमेंट गोल नुहे ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर besides seeking more income one way or the other people also seek things like ହେଲା besides seeking more income one way or the other जमती इनकम पे गोटे किंबा दीटा पंथा धरा जाए people also seek things जमती आउ कौन करती इक्वालिटी सॉरी ट्रीटमेंट फ्रीडम सिक्योरिटी ऑल ऑफ देम तो आउ लोक कौन जानती सेमती समान चिकित्सा है समान स्वाधीनता आ समान कौन प्राइवेसी बा सिक्योरिटी चाहती ऑल ऑफ देम नेक्स्ट देख डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड इंटरप्रिट्स द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड हर बुझे ए जिनसटा जो लाइनटा लिखाई पे यहाँ क्या ऊपर कह पचार किसी ना यहाँ आसो कौन नेशनल डेवलपमेंट कथा कह देख लिस्ट हाउ मेनी टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट ए वेसल डम्प्ड इन ए सिटी कॉल्ड एबिडजान इन आइवरी कोस्ट ए कंट्री इन अफ्रीका हाउ मेनी टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट ए वेसल डम्प्ड इन ए सिटी है गोटे हाँ गोटे वेसल कौन करे लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट कौन करे डिप्स हाँ वेस्ट को कौन करे डम्प करे है माने रिसाइकल करवा डम्प बा पोतिबा है इन ए सिटी कॉल्ड एबिडजान इन इवरी कोस्ट तो तार क्वांटिटी केते बोले कहूँ तो ये आसो कौन 500 टन्स कंट्रीज विथ हायर इनकम आर डेस देन अदर्स विथ लेस इनकम कंट्रीज विथ हायर इनकम आर डेस देन अदर्स विथ लेस इनकम है जो मानकर हायर इनकम बा हायर इनकम से माने कौन मोर डेवलपमेंट जो मान लेस इनकम नेक्स्ट देख देख जोग्राफी टर्म टिके बुझा को आपन को विरक्त लगे किंतु पेशेंस सहित आपन करबा कारण जोग्राफी आपन क्वेश्चन एमती ही आसे इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज इनकम नेशनल इनकम बाय इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज तो आम कौन कहबा ये जो कौन पर कैपिटल इनकम पढ़ले इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 rich countries were those which in 2004 had the per capita income of तो 2006 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अनुसार रिच कंट्री आम क्या कहबा जो मैंने 2004 से पर कैपिटल इनकम केते थिला तो आसो के 4,53,000 पर आनम एंड बफ बुझे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 लो इनकम कंट्रीज वेर दोज व्हिच इन 2004 हैड द पर कैपिटल इनकम ऑफ लो इनकम क्या हुआ हमें कहबा कंट्री कथा पचार है कंट्री कथा ये आसो कौन 37,000 और लेस ऑप्शन ए इन 2004 इंडिया केम इन द कैटेगरी ऑफ 2004 इंडिया को कैटेगरी थिला रिच कंट्री लो इनकम कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज मीडियम इनकम कंट्रीज तो ये आसो कौन लो इनकम कंट्री ऑप्शन बी नेक्स्ट देख कंपेयरिंग ऑल स्टेट्स आइडेंटिफाई द स्टेट व्हिच हैड द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम इन 2002 to 2003 तो कोट स्टेट रो हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम थिले 2002 रु 2003 भितर तो स्टेट आसो कौन अटे पंजाब नेक्स्ट देख व्हिच स्टेट हैड द लीस्ट पर कैपिटल इनकम इन 2002 रु 2003 लिस्ट
तो ये आसो कौन स्टेट बिहार। नेक्स्ट देख नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year is known as। देख पिले चिल्ड्रेन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 प्रति केते हजार रे प्रति हजार रे चिल्ड्रेन जो बर्न हुआ से कौन वर्षक भितर जो मान डेथ हो जाए से कौन कह जाए डेथ रेट सर्वाइवल रेट इनफैंट मोर्टालिटी रेट लाइफ डेथ रेट डेफिनेशन ताको कौन कहबा आम इनफैंट मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट देख proportion of literate population in the 7 and above age group is called as proportion of literate population in the 7 and above age group is called as कौन कह जाए कौन लिटरेसी रेट। नेक्स्ट देखो which age group of children is included for calculating net attendance ratio net attendance ratio क्या नहीं कैलकुलेशन कर जाए माने को एज ग्रुप पिला नहीं ये आसो कौन 6 ରୁ 10। नेक्स्ट देख इन 2003 इनफैंट मोर्टालिटी रेट इन केरला वाज 2013 इनफैंट मोर्टालिटी रेट केरला केते थिला देख जोग्राफी सॉरी इकोनॉमी मींस प्रीवियस ईयर डाटा आपन पचारिबो हला तो ये आसो केते 11। For the year 1995 to 96, the net attendance ratio for class 1 to V in Bihar was Bihar रे केते थिला तो ये आसीबो केते 41। नेक्स्ट देखो literacy rate for the rural male population of Uttar Pradesh is केते आसीबो क्वेश्चन इजी रे बुझी पड़थिबो हला ये आसी केते 52%। For calculating body mass index by BMI, the weight of the person is divided by तो weight सहित BMI काढिया पे weight सहित कौन डिवाइड करा जाए ये आसीबो कौन स्क्वायर ऑफ द हाइट को डिवाइड करा जाए ओके बी हे जिवो करेक्ट आंसर। जदि BMI कौन है ना 18.5 रु कम है बुझला तो ताको कौन बोली कंसीडर करा जिवो अंडर नरिश्ड मीन्स कौन भलसे पोषणर अभाव बोली कह जिवला। नेक्स्ट देख रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हिच कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड on the educational levels of the people the health status for a capital income is तो UNDP कौन कर गोटे रिपोर्ट पब्लिश कर बुझे दूसरी UNDP गोटे कौन रिपोर्ट पब्लिश करुच्ची तो सेटा कौन एजुकेशन लेवल हो हेल्थ स्टेटस पर इन कैपिटल इनकम कथा से कौन कह तो से रिपोर्टा कौन बा UNDP को रिपोर्ट जारी करे तो ये आसो कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करे UNDP जारी करे है HDI rank of India in the world out of 177 countries in 2004 HDI Human Development Index rank केते आसीबो ये आसीबो 126। नेक्स्ट देखो India's per capita income in US dollar is dash Sri in 2004 कथाटे कहै तो ये आसीबो कोन लेस देन Nepal has nearly dash the per capita income of India रिपोर्ट देखो रिपोर्ट अनुसार मो चाहला एबे नहीं ये आसीबो कोन हाफ what proportion of the country is overusing their groundwater reserves केता आसीबो ये आसीबो कोन 1/3 resources which will get exhausted after 3 years of use is called कौन कहि परिबा हम को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माने ताको हम कौन रिन्यूएबल करि परिबा नाही ताको हम सही जोटा कि केते वर्ष पर कौन हो जाए सरी जाए ओके देखो एटा कहछि फिल इन द ब्लैंक्स करिया पे कहछि
Employment in the service sector days increased to the same extent as production. So, employment in the service sector days increased to the same extent as production. ये जो कौन हैज नॉट हला हैज नॉट लिखियो हला ग्रामर नहीं रेडा हला नेक्स्ट देखो वर्कर्स इन द डे सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स तो को सेक्टर रे गुड्स प्रोड्यूस हुए नहीं नेक्स्ट कौन हम एटा ये जो कौन टर्शियरी एटा कौन सर्विस आसीयो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डे सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी को सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड ना अनऑर्गेनाइज्ड जॉब सिक्योरिटी कोटारे मिलिबो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ए डेस proportion of laborers in India are working in the unorganized sector large or small large number of people कौन worked in a unorganized sector cotton is a dash product and cloth is a dash product cotton गोटे कौन हम नेचुरल प्रोडक्ट है किंतु क्लॉथ टा गोटे कौन हम मैन्युफैक्चर्ड हम The activities in primary, secondary, and tertiary sector are dash independent or interdependent. Interdependent or dependent. कौन है परियो? Sorry, independent or interdependent. Dependent. तासे वो कौन interdependent. The activities in primary, secondary, and tertiary sector are interdependent. है निज निज भीतर कौन dependent है प्राइमरी नथिले सेकेंडरी हम कि सेकेंडरी नथिले टर्शियरी हम ओके देखो द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को अनुसार क्लासिफाई करा जाए एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द नेचर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेस तो ये हो कौन ओनरशिप अनुसार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर करा जाए प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर तो ये हो कौन प्राइमरी सेक्टर नेचुरल प्रोसेस आसला बरा नेक्स्ट देखो तो ये आसला कौन जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश produced during a particular year. GDP is the total value of dash produced during a particular year. कौन है पारियो जीडीपी होची कौन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर दैट आसे कौन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन 2003 इज जीडीपी अनुसार टर्शियरी सेक्टर अवदान केते थिला 2003 अनुसार बिटवीन 50% टू 60% है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखो हाँ एटा हम पढ़िले हम कोन ना द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ये जो कोन ओनरशिप एंटरप्राइजेस द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑल फाइनल गुड्स पिला ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ए पढ़िले कोन हे परियो ये जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेक्स्ट देखो द सर्विस सेक्टर इनक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज तो सर्विस सेक्टर कौन कौन थाए कौन हो पार ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स कौन इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर it is outside the control of the government jobs are not regular it provides low salaries कौन है परियो हाँ मीनिंग पचार चार है इट कवर्स द दोज एंटरप्राइजेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कथा पचार नेक्स्ट देखो प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर बा विच सेक्टर
तो ये पढ़िला आम कौन प्राइमरी सेक्टर आस नेचुरल प्रोसेस जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर है नेक्स्ट देख यहाँ पढ़िले इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन 2003 केते आसीबो 50 ରୁ 60%। नेक्स्ट देख अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल अंडर एम्प्लॉयमेंट आम केतल कहबा अंडर एम्प्लॉयमेंट पिले जो माने वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग आपणर सक्षम जेतिकी बा गोटे लोकर सक्षम जेतिकी से ताडू कम काम करले ताको आम कोन कहबा अंडर एम्प्लॉयमेंट कहबा। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द देखो क्वेश्चन प्राइमरी सेक्टर ये किंतु क्वेश्चन कौन भेराइटी क्वेश्चन माने टिके टिके सेंटेंस चेंज हुए। नेक्स्ट देखो नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोथरे हम प्रोसेसिंग डा आपनर कोडा आसीबो मैन्युफैक्चरिंग कोडा आसीबो सेकेंडरी सेक्टर आसीबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर तो टर्शियरी सेक्टर रे भितर कोडे जीवो देखो एटीएम ये गोटे कौन सेवा कॉल सेंटर्स ये भी गोटे सेवा इंटरनेट कैफ ये गोटे सेवा तो सबूजा कौन है सर्विस सेक्टर मीन्स कौन टर्शियरी सेक्टर तो ऑल ऑफ द ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट ओनली डेज आर इंक्लूडेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इच सेक्टर ओनली डेज आर इंक्लूडेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इच सेक्टर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस बुझला टोटल प्रोडक्शन आम क्या करवा ना जो फाइनल गुड्स है बुझला फाइनल गुड्स को आम ना कौन टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट this was the most important sector of economic activity at the initial stage of development this was the most important sector of economic activity कोडा है प्राइमरी सेक्टर है इनिशियल स्टेज रे सब डेवलपमेंट पे कोडा प्राइमरी सेक्टर रे डिपेंडेंट इन द past 100 years there has been a further shift from secondary to this in the development countries तो ये जो कौन टर्शियरी माने शिफ्ट कौन है सेकेंडरी सेक्टर रो डायरेक्ट है कौन टर्शियरी सेक्टर। मेंशन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2003 इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2003 इन इंडिया पढ़ाई पारिबो ये जो कौन टर्शियरी। नेम द सेक्टर व्हिच कंटेन्स टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन द ईयर 2000 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर पढ़ाई पारिबो 2000 कथा ये कहई ये आसो कौन प्राइमरी सेक्टर रे अधिक लोक थे ए सिचुएशन इन व्हिच मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए जॉब देन आर ऑप्टिमली रिक्वायर्ड गोटे काम को कौन गोटे काम को जड़े करवा कथा कि से कम कौन 4 जन लगी 3 जन लगी आम को प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट कहवा ताको आम कौन कहवा डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ऑप्शन बी हो कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख ए स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमिशन एस्टिमेट्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर एलोन केते नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड पे कराई एजुकेशन सेक्टर ये आसीबो केते 20 lakhs out of 200 million children in the school going age group how many are attending school 200 million children नाम देखिबा तो केते जण अटेंड करंतु स्कूल 19 को केता हो यासिबो कोन 2/3। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमिशन इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इन इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू पीपल मोर देन जदि टूरिस्ट क्षेत्र में आम कौन मान टूरिस्ट सेक्टर को आम जब इम्प्रूव करवा तो आम केते जन को एम्प्लॉयमेंट दे पारिबा केते आसीबो 35 lakhs। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया
केते कहिछि ये आसीबो केते 200 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर नेरगा sorry NERGA NERGA 2005 how many of days of work in a year are guaranteed by the government ହେଲା ତ ଶୁଣ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଲା ତ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି କୁହ ये आसीबो केते 100 days नेक्स्ट देखो enterprises or places of work where the terms of employment are regular and people have assured work comes under the को सेक्टर जीवो बोली कहिछि ये जीवो कोन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बुझला रेगुलर आसला मींस पिले तुम भाबी दो जे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अंडर हां परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन टर्शियरी सेक्टर इज केते अछंती टोटल या से कहते 76% देखो इन द रूरल एरियाज द unorganized sector mostly comprises of landless agriculture laborer garment makers street vendors sharecroppers and artisans अनऑर्गेनाइज माने रूरल एरिया रे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का को नै कि रही चला कंप्राइजेस ऑफ डेस कोन परिबो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर आ कोन शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस एटा ऑप्शन डी हे जीवो कोन करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द देम डज नॉट जनरली फाइंड इटसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ଭିତରୁ କୋଉମାନେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ନଟ୍ ଜେନେରାଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସେକ୍ଟର କୋଉମାନେ ପାରିବେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ସେମାନେ କାହିଁ ଆସିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଆସିବ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା गवर्नमेंट कोड ओन करिवो जोटा पब्लिक सेक्टर हेतिबो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन व्हिच आर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन व्हिच आर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओ सेक्टर एडे ये आसीबो कोन गवर्नमेंट ओके तो पिला माने ये थिला जे आपनर किछि क्वेश्चन हला बाकी आ जति क्वेश्चन अछि हम आ गोटे क्लास रे कंप्लीट करबा चेष्टा करबा आशा कर आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो आपको भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास जय हिंद वंदे मातरम।